Hello students, welcome you all on behalf of Resonance. Today on 25th, shift 2 paper on memory based paper. आज कौन से क्वेश्चंस आए हैं, चलो देखते हैं. The first question from atomic structure, threshold frequency of a metal is given 1.4 into 10 power 15 second inverse, then minimum amount of energy required to eject an photoelectron from metal is, and given the Planck's constant H value is 6.6 into 10 power minus 34 seconds. Okay. And you know photoelectric effect, when the photon, that means when light falls on the metal surface, the photoelectrons are emitted. That process or that phenomenon is said to be the photoelectric effect. And here the incident photons energy should be equal to threshold energy plus kinetic energy, and here this is the minimum energy that is required to eject the electron. So, for minimum energy E is equal to E naught, and we can calculate by using this formula, that is E equal to Hc by lambda, and here by substituting the frequency and H values, you will get 9.24 into 10 power minus 19 joules. This is the minimum energy required to eject this electron. Next question from gaseous state. An ideal gas A is present in a closed rigid container at 27 degrees Celsius and 38 atm pressure. Then find the pressure of the gas at 45 degrees Celsius and report your answer to nearest integer. And here volume is constant and number of moles are constant, then P is directly proportional to T. By substituting the data given, we can calculate final pressure at 45 degrees Celsius. So, on substituting the data, you will get the final pressure as 40.28 atm. Next question, 0.1 molar 10 milliliters of an acid A neutralizes completely by 0.05 molar 20 milliliters of a base MOH twice, then basicity of the acid A is. It is based on law of equivalence, and acid when reacts with base, you know, it gives salt and water, and here the milli equivalents of acid is equal to milli equivalents of base, and we are using this law of equivalence, and here the acid basicity, let it is N, and the molarity and volume is given 0.1 into 10 ml, and MOH twice, its acidity is 2, that is base acidity, and its concentration 0.05 molar, volume is given 20 milliliter. From this we can calculate N as 2. This is the basicity of the acid. Next question, this is from solution colligative properties. इसमें ये दिया है 7 grams of a solute, molar mass दिया है 93 grams, dissolves in 42 grams of water. If solute get dimerized in water and depression in freezing point is 20 degrees Celsius, then find percentage association of solute. इसमें delta TF equal to I into KF into M, this formula is used. इसमें delta TF depression in freezing point, I Van Hoff's factor, KF that is molar depression constant, and M molality. अब इसमें delta TF value is given 2 and I value पहले हम इसको कैलकुलेट करना है, KF is given and molality कैलकुलेट करने के लिए डेटा दिया है, molality equal to weight by gram molecular weight of solute into 1000 by weight of solvent. So, substituting the data given, 7 grams of solute is given and 93 is the molar mass of the solute given,
and 42 grams is solvent weight is given. On solving, you will get I into 3.33 and I value you will get 0.6. And this Van der Waals factor, in case of association of solute, it is equal to 1 plus 1 by n minus 1 into beta, and we have to find this beta value, and I value we got 0.6, and substituting n value is, it is dimerizing, so n value is 2, and if you calculate the beta value you will get 0.8. The percentage of association पूछा है, तो percentage of association will be equal to 80%. ये सॉल्व करेंगे तो आपको 0.8 आएगा बीटा वैल्यू और परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन 80% होगा. Next question. For a reaction, A gives product at a pressure 55 kilopascals, T half is 340 second, while at a pressure 27.5 kilopascal, T half is 170 second. Find order of the reaction. Simple question from chemical kinetics. You know T half is directly proportional to P power 1 minus n, and T half of 1 upon T half of 2 equal to P1 power 1 minus n upon P2 power 1 minus n. इसको हम इसमें पुट करेंगे तो आपको ये डेटा से n वैल्यू आ जाएगा 2. सो ये n वैल्यू इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन. Now, this is the question based on electrochemistry, that is electrochemical series के डेटा से दिया हुआ क्वेश्चन है. Arrange the following in increasing order of reduction potentials. ये reduction potentials of chlorine, iodine, lithium, sodium and silver are given. आप ये जानते हैं इसमें नॉन मेटल्स हाइड्रोजन के नीचे आएगा और ये मेटल्स में सिल्वर हाइड्रोजन के नीचे आएगा और हाइड्रोजन के ऊपर लिथियम और सोडियम आएगा. सो ये डेटा से हम इसको अरेंज कर सकते हैं. दैट इज लिथियम सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है तो ये -3.05 एंड सोडियम -2.71 वोल्ट्स, एंड फॉर आयोडीन E naught value is 0.54 volts, for silver 0.80 and for chlorine it is 1.36. And from top to bottom oxidizing strength increases and reducing strength decreases, and chlorine is the strong lithium is the strong reducing agent from this. So if you arrange, it will be C less than, D less than, V less than, E less than A. This will be the order of reduction potentials. Next question, this is also from gaseous state. For an ideal gas on increasing temperature by 1 degree Celsius, pressure increases by, it is not 0.4%, it is 4%. Then find initial temperature, consider volume and amount of the gas remains constant. Report your answer as x into 10 power minus 2. Now, the same type question, here volume and number of moles are same. So, pressure is directly proportional to temperature, P1 by T1 equal to P2 by T2, and if you put the data, then you will get temperature as 0.04 Kelvin, because here P2 equal to initial pressure P1, let it is P, and P2 is P plus, it is 4% of P, and if you get, it is 1.04 P, and substituted here, and on solving this temperature you are getting 4 into 10 power minus 2 Kelvin, and it is expressed in the form of x into 10 power minus 2 Kelvin. So, x value is equal to 4. अब ये क्वेश्चन है फ्रॉम आयनिक इक्विलिब्रियम. इसमें स्टेटमेंट्स दिया है.
According to Lewis concept, H2O acts as an amphoteric substance. ये गलत है. क्यों? Lewis concept से acid means lone pair donor. That means lone pair acceptor is the acid, lone pair donor is the base, and here it is given as H2 acts as amphoteric substance. But according to Lewis, it is having H2 is having lone pairs and it is the lone pair donor. H2 is lone pair donor. So, Lewis according to Lewis, it is a base, but not as an acid. That is why it is not amphoteric, but according to Bronsted or Arrhenius, you can say it is an amphoteric. And second statement, H2O acts as acid on reaction with ammonia, while it acts as a base on reaction with H2S. Yes, it is correct. So, statement 1 is false and statement 2 is true. Next, calculate the solubility of Bi2S3 in water. Ksp is given and we have to calculate the solubility, and it is A2B3 type salt, and here for bismuth and for sulfur the solubilities are 2S and 3S, and if you calculate Ksp, it is equal to 108 S power 5, and if you equate to this, it is 1.08 into 10 power minus 73, it can be written as 108 into 10 power minus 75, it is equal to 108 into 7 S power 5, and on solving you will get S value as 1 into 10 power minus 15, and here x, this is expressed as x into 10 power minus 15. So, x value आएगा 1. How many of the following molecules have non-zero dipole moment? इसमें dipole moment जिसका जीरो होता है उसको हम कहेंगे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, और जिसका नॉन जीरो होता है उसको पोलर मॉलिक्यूल्स. इसमें H2O, NH3, HCl ये पोलर मॉलिक्यूल्स है, इसके लिए डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो है. और बेरिलियम फ्लोराइड, बोरान ट्राइफ्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, इनके लिए डाइपोल मोमेंट जीरो. क्यों? इनके लिए सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है, दैट इज बेरिलियम फ्लोराइड के लिए लीनियर एंड बोरान ट्राइफ्लोराइड के लिए ट्राइगोनल प्लेनार शेप एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड के लिए टेट्राहेड्रल. सो इस तरह ये सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर जिस मॉलिक्यूल्स का होगा उसका डाइपोल मोमेंट जीरो होता है. और नॉन जीरो किसका होता है? जिसके लिए सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर नहीं होता है. H2O के लिए एंगुलर और बेंट स्ट्रक्चर है, और अमोनिया के लिए पिरामिडल है, HCl के लिए तो लीनियर है, लेकिन Cl एंड हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा, तो इसकी वजह से इसमें डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो. और विच ऑफ द फॉलोइंग आयन हैव मिनिमम मैग्नेटिक मोमेंट स्पिन ओनली? और मिनिमम मैग्नेटिक मोमेंट होना है तो इसमें नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स भी मिनिमम होनी चाहिए. तो इसमें हम देखेंगे तो क्रोमियम 2 प्लस कॉन्फ़िगरेशन 3d4 एंड नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आर 4, एंड V2 प्लस में 3d3 कॉन्फ़िगरेशन, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स 3, आयरन 2 प्लस में 3d6 कॉन्फ़िगरेशन, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स 4, निकेल 2 प्लस में 3d8, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आर 2. सो इन सब में सबसे लेस नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स निकेल 2 प्लस में, तो इसलिए इसके लिए मिनिमम मैग्नेटिक मोमेंट होता है. नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट. सेम इसी तरह की क्वेश्चन है, और इसमें भी हम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करेंगे. बेस्ड ऑन द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स वी कैन अरेंज दीज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट्स. इसमें FeCl36H2O, इसमें आयरन के लिए +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, और इसमें 3d5 कॉन्फ़िगरेशन, देयर विल बी 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स. और इस कॉम्प्लेक्स में K3FeCN6 में आयरन इज इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, बट इन प्रेजेंस ऑफ Cn- ligands, that is iron
even though it is in +3 state and 3d5 configuration, in presence of strong field ligand, it is having T2G 221 is a 0,0 configuration. Here there will be one unpaired electron. And next one, hexamine cobalt, इसमें cobalt +3 state में और NH3 strong field ligand, and here also the configuration in presence of strong field ligand is T2G 222 and EG 00. So इसकी वजह से इसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है. सो सबसे कम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स किसमें होगा? थर्ड वन. सो इसको हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के ऑर्डर में हम अरेंज करेंगे. तो ऑप्शन यू विल गेट थर्ड वन. Next, the correct order of electron gain enthalpies for a given elements. फ्लोरीन, क्लोरीन, टेलुरियम, पोलोनियम. इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन same group elements, tellurium, polonium also same group elements, that is 16th, and these are 17th group elements. हम जानते हैं 17th ग्रुप एलिमेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है, लेकिन इसमें ये 17th ग्रुप में भी क्लोरीन के लिए सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है. Among all the elements in the periodic table, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसके लिए है? क्लोरीन. और फ्लोरीन के लिए क्यों नहीं है? क्योंकि फ्लोरीन के लिए स्मॉल साइज होता है और क्लोरीन के लिए लार्जर साइज होगा. ये स्मॉल साइज की वजह से इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस भी होगा और इंटर न्यूक्लियर रिपल्शंस भी होगा. तो इसकी वजह से वो न्यू इलेक्ट्रॉन को इतना आसान से एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा. तो इसकी वजह से ये F- इतना आसान से नहीं बन पाएगा. तो इसलिए कंपेयर टू क्लोराइड Cl- आयन, F- आयन नहीं बन पाएगा इजीली. तो इसलिए इसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी कम होता है. तो इसमें आप देख सकते हैं डेटा बेस्ड ही है. आपको ये 17th ग्रुप एलिमेंट्स में और 16th ग्रुप एलिमेंट्स में टेबल दिया है एनसीईआरटी में, वो डेटा बेस्ड ही है. वो डेटा बेस्ड में इसमें आप ये वैल्यूज देख सकते हैं. -328 किलोजूल पर मोल एंड क्लोरीन के लिए -349. टेलुरियम एंड पोलोनियम में सबसे ज़्यादा किसका हो रहा है? क्लोरीन का. इसको हम अरेंज करेंगे तो अरेंजमेंट इस तरह आ जाएगी और दिस विल बी द आंसर. Next, PCl5 plus H2O gives A plus HCl, A plus H2O gives B plus HCl. इसमें PCl5 वाटर से रिएक्ट हो गया तो POCl3 प्लस HCl बनेगा और ये POCl3 फिर वाटर से रिएक्ट होके H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड एंड HCl बनेगा. और इसमें फॉस्फोरिक एसिड में कितने आयनाइजेबल हाइड्रोजन्स है? इसमें H3PO4 में कितने आयनाइजेबल हाइड्रोजन्स है? इसमें आप देख सकते हैं H3PO4 में नंबर ऑफ आयनाइजेबल हाइड्रोजन्स आर 3. ओके, नंबर ऑफ आयनाइजेबल हाइड्रोजन्स 3. ये OH ग्रुप्स के ये 3 हाइड्रोजन से आयनाइजेबल होता है. सो आंसर 3. नेक्स्ट, lead nitrate decomposes on heating, that is 2 PbNO3 twice is giving 4 NO2 plus 2 PbO plus O2. और ये NO2 डाइमराइज हो जाएगा एंड गिव्स N2O4. सो ये यहाँ NO2 को हम ये से इंडिकेट कर रहे हैं. ये ऑन डाइमराइजिंग इट इज गिविंग N2O4 और N2O4 में इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है N2O4 का, और इसमें कोई ब्रिडजिंग ऑक्सीजन एटम्स नहीं है. ये सारे टर्मिनल ऑक्सीजन एटम्स ही है. सो नंबर ऑफ ब्रिडजिंग ऑक्सीजन एटम्स पूछा है ये N2O4 में,
डाइनाइट्रोजन टेट्रोक्साइड में, so there will be no bridging oxygens. This one. Next, this is from metallurgy. In electro refining of blister copper, precious metals are obtained in anode mud, and statement to pure copper is obtained by above method. Yes, by using blister copper in the electrolytic refining, we will electrolyte by taking impure anode, impure copper as anode, and pure copper rod as cathode. And here the electrolyte is acidified copper sulfate solution. It is acidified copper sulfate solution. This is the electrolyte. Now, on passing electricity at anode, from the impure anode, copper gets oxidized, and at cathode, this copper ions from the electrolyte get reduced to copper and deposited at the cathode, that is pure copper rod. Now, at anode, the anode mud contains the impurities, and in that impurities there is silver, gold, antimony, tellurium, selenium, and platinum. These metals are present in the anode mud. Here the precious metals, gold, silver, platinum, these are the precious metals, and by the recovery of these precious metals, the cost of this refining will be balanced. So, these are the metals that is obtained in the anode. You can remember this as आओ आज सब टीचर से पीटे. इस तरह आप एनोड मड के ये सारे मेटल्स को याद रख सकते हैं. आओ आज सब टीचर से पीटे. तो इस तरह ये एनोड मड के मेटल्स को आप याद रख सकते हैं. इसमें कौन सा मेटल्स इम्प्योरिटी में आएगा एनोड मड में? दैट इज गोल्ड, सिल्वर, एंटीमनी, tellurium, selenium, platinum. Okay, students, that's it about this memory based paper. These are purely based on the memory of students. Okay, I hope you enjoyed. Thank you.